Good morning, everyone. This is your first class of class 9 science. Okay, so we have discussed in first class syllabus of science कि एक्चुअल में आपको क्लास 9 साइंस के सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है. ओके फाइन. तो फर्स्ट चैप्टर इज मैटर इन अवर सराउंडिंग. ओके दैट मीन्स व्हाट इज मैटर. ओके कि मैटर होता क्या है और हमारे चारों ओर का जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या रिएक्शंस होते हैं. ओके फाइन. और उसकी क्या जरूरत है क्या नहीं. सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर. तो इस चैप्टर में आपको ये पढ़ना है कि मैटर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर. ओके कलेक्शन ऑफ मैटर इज कॉल्ड सॉल्यूशन. एंड तो बहुत सारे मिक्सचर बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं, व्हाटएवर. इस टाइप का आपको कंटेंट इस चैप्टर में मिलेगा. नाउ नेक्स्ट थर्ड चैप्टर इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. Okay, so what is atoms? Atom is a collection of small particles. Okay, structure of atom कि how to define structure of atoms. Yes, तो in class 9th in this chapter structure of atom defined by scientist. Okay, Rutherford model, Niels Bohr model. Okay. Now next, fundamental unit of life. Okay, fundamental unit of life is called cell. Cell आप लोग in 2 to 3 years before time से आप पढ़ रहे हैं. Yes, cell is a fundamental unit of life. It is a building block of life. Okay, now next chapter number 6 is tissues. Collection of cell is known as tissues. तो आपको 9th में tissues को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. Okay, because here आपको 9th क्लास में टिश्यूज 2 टाइप का पढ़ना है, प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज एंड सम टॉपिक अबाउट ह्यूमन टिश्यूज. ओके लाइक न्यूरॉन सिस्टम. ओके नाउ नेक्स्ट डाइवर्सिटी. ओके मोशन. व्हाट इज मोशन? मोशन इज अ यूनिफॉर्म मोशन और अनयूनिफॉर्म मोशन. ओके इन दिस चैप्टर दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स. ओके मोशन. तो मोशन में आपको 3 मोशन की इक्वेशंस को डेरिवेट करना है, उनको प्रूव करना है. ओके और इनके रूल्स एंड इक्वेशन दोनों पढ़ना है. दिस इज आवर मोस्ट फेवरेट चैप्टर. नाउ नेक्स्ट फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन. यस ग्रेविटेशन. यस वर्क एंड एनर्जी. साउंड आई थिंक all of you know about sound and everyone read about sound in previous class. Why do we fall ill? Yes, कि हम बीमार क्यों होते हैं. तो ये भी पढ़ना है. जैसे बायोलॉजिकल चैप्टर्स, नेचुरल रिसोर्सेस. यस जो नेचर से हमें रिसोर्सेस प्राप्त होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में पढ़ना है. लास्ट वन इज इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेस. यस in this chapter we have discussed about what is crop management and how to improvement of food resources कि food resources को हम कैसे improvement कर सकते हैं. Okay fine. So now we have discussed about chapter number 1. Chapter number 1 is name is matter in our surrounding. Okay तो first of all कि what is the definition of matter. Okay, so please listen carefully. Anything which has on mass and they occupy some space is called matter. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका खुद का एक मास होता है एंड वो कुछ ना कुछ स्पेस कवर करता है, दिस इज कॉल्ड मैटर. ओके फाइन. तो मैटर वो हर वो चीज होगी जो खुद का एक मास होगा एंड वो कुछ ना कुछ स्पेस कवर करेगा. इज कॉल्ड मैटर. ओके सो मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. ओके मैटर 3 कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है. फर्स्ट वन इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. फोर्थ कैटेगरी इज प्लाज्मा. यस
now we have discussed difference between solid, liquid and gas. So first of all we have discussed solid. In solid particles, okay, particles of solid matter is combined very closely. Okay, फाइन. तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही पास एक दूसरे के साथ मर्ज हुए होते हैं, मींस जुड़े हुए होते हैं. उनमें इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए सॉलिड को ब्रेक करना इजीली नहीं है. ओके फाइन. नाउ नेक्स्ट, solid molecular particles are very strongly because it have intermolecular mass is very high. Okay fine. Now next, the particles do not flow. That means जो solid के particles होते हैं वो flow नहीं हो सकते हैं. Solid have fixed mass and volume. सॉलिड के पास अपना एक खुद का एक फिक्स्ड मास होता है एंड वॉल्यूम होता है. ना तो हम इसके वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं ना ही इसके वॉल्यूम को कम कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड. दैट मींस सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड हुए होते हैं और इनका एक डेंसिटी भी मैक्सिमम होती है. दे हैव मैक्सिमम डेंसिटी. यस. लीस्ट काइनेटिक एनर्जी. ओके, सॉलिड के पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम अमाउंट में होती है, इसलिए ये इजीली मूव नहीं हो पाते हैं बिकॉज दे हैव इंटरमॉलिक्यूलर मास वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, दे डिफ्यूज वेरी स्लोली. तो इनको डिफ्यूज करना बहुत टफ होता है क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से क्या होते हैं, बाइंड हुए होते हैं. इनके पार्टिकल्स होते हैं जो बाइंड हुए होते हैं. ओके फाइन. Now next we have discussed in liquid. हम लिक्विड को डिस्कस करते हैं. ओके, तो लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. ओके, तो लिक्विड के पास क्या होता है, अपने फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. ओके, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप. लिक्विड के पास अपना कोई शेप नहीं होता है. जिस स्ट्रक्चर में आप उसको डालेंगे या रखेंगे लिक्विड के लिए वो उसका शेप इनहेरिट कर लेता है. ओके, नाउ नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट इज दे कैन फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल. तो जो लिक्विड होता है हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर क्या करता है, मूव करता है, फ्लो होता है. नाउ नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड is less than solid but more than gases. तो जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, वो सॉलिड एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट वो बहुत कम होते हैं. ओके, बट गैस के कंपैरिजन ये इसके पार्टिकल्स पास होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैसेस. काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज मोर देन सॉलिड. ओके, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गैसेस बिकॉज ये इजीली मूव कर जाते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल वाटर. ओके, पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड. इनके पार्टिकल्स बहुत पास नहीं होते हैं इसलिए मूव कर जाते हैं. It have less density as compared to solid. Now third one is gas. What is gas? You know about hydrogen gas, oxygen gas, nitrogen gas, chlorine gas, bromine gas and whatever. So gases का कोई fixed volume नहीं होता है. They do not have fixed volume. Okay, they do not have fixed shape. Okay, ना तो इसका shape फिक्स्ड होता है ना ही इसका वॉल्यूम शेप
सेफ होता है। Now next is the particles have maximum kinetic energy. So as compared to solid, liquid, gas have maximum kinetic energy because वो freely environment में move हो सकती है। ओके, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, इंटरमोलिकुलर मास बहुत ही कम होता है, जिसके कारण वो फ्रीली एनवायरमेंट में मूव हो जाती है। ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट we have discussed characteristics of particles of matter. This portion is completed. Okay, now next is characteristics of particles of matter. Okay, तो हमें बताना है कि मैटर के कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो there are a lot of characteristics, but we have discussed only three most important characteristics of matter. First one is have space between them. तो जो मैटर होते हैं, मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच जो स्पेस होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है सभी के पास होता है। सॉलिड में स्पेस कम होता है, ओके, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होता है, यस, एंड मैक्सिमम स्पेस है गैसियस स्टेट। ओके, नाउ नेक्स्ट अट्रैक्शन ईच अदर। तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ओके, कंटिन्यूअसली मूविंग। ओके, तो जो सॉलिड को छोड़ दिया जाए तो लिक्विड एंड गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। ओके, यस। नाउ नेक्स्ट we have completed this portion. Okay, स्टूडेंट नोट्स बनाने के लिए मैं आपको एक पीडीएफ सेंड करूंगा, तो आप इसके नोट्स बहुत अच्छे तरीके से A4 साइज के रजिस्टर में आप लोग लिख लेंगे। ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर मींस मैटर कब कब चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और गैस से फिर सॉलिड। ओके, तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, एवापोरेशन, ह्यूमिडिटी, सब्लिमेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, दिस इज अ मेथड्स फॉर कन्वर्जिंग वन स्टेट टू अनदर। तो इसके दो रीजन होते हैं। व्हेन फर्स्ट वन इज उसके प्रेशर में चेंज होता है, सेकंड वन इज उसके टेम्परेचर में चेंज होता है। ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट, तो प्लीज राइट डाउन द हेडिंग ऑफ interconversion of state of matter. ओके, तो इस चैप्टर में आपको, इस टॉपिक में आपको पढ़ना क्या है, कन्वर्जन कौन कौन से होते हैं। ओके फाइन। या फिर इसको मेथड्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मेथड्स। फर्स्ट वन इज फ्यूजन। फर्स्ट मेथड्स का नेम है फ्यूजन। तो स्टूडेंट प्लीज लिसन केयरफुली। व्हेन सॉलिड सब्सटेंस गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, इस फिनोमेना इज नोन एज फ्यूजन। जब कोई सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली कन्वर्टेड लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन। ओके, तो फ्यूजन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, सो प्लीज राइट डाउन। व्हेन सॉलिड सब्सटेंस गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म इज नोन एज फ्यूजन। ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट, वेपोराइजेशन।
ओके फाइन। तो वेपराइजेशन का डेफिनेशन क्या होगा? व्हेन लिक्विड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसेस, जब कोई लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है? डायरेक्टली गैस में, तो हम उसको क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। ओके नाउ नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। थर्ड वन इज sublimation. Third one is sublimation. तो sublimation के लिए डेफिनेशन ये है स्टूडेंट्स, प्लीज लिसन. Sublimation is the process in which solid change into vapors directly without is converted into liquid. Okay, fine. तो that means कि जब कोई solid सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सब्लिमेशन. मींस इन सब्लिमेशन रिएक्शन, द सब्लिमेशन प्रोसेस solid not converted into liquid but solid is converted into gas. For example, camphor, that means हिंदी में camphor को बोलते हैं कपूर. yes, solid form में होता है और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है और वो क्या हो जाता है? गैस फॉर्म में उड़ जाता है. नेक्स्ट इज कंडेंसेशन. Okay, fine. So it is that type of physical properties in which gaseous molecule it's converted to liquid form. तो कंडेंसेशन क्या होता है? जो गैसियस एलिमेंट होते हैं या गैसियस फॉर्म में होते हैं कन्वर्ट किस में हो जाते हैं? लिक्विड फॉर्म में. तो हम उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन. नाउ फर्स्ट वन इज सॉलिडिफिकेशन. So it is that type of physical phenomena in which liquid molecules change into solid. Solidification. मीन्स जो लिक्विड फॉर्म में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं डायरेक्टली किस फॉर्म में? सॉलिड के फॉर्म में. फॉर एग्जांपल वाटर से आइस का बनना, ओके, इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन. सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स इन द कन्वर्जन ऑफ बिटवीन स्टेट्स. ओके, next topic is latent heat फ्यूजन. यस, तो फ्यूजन की प्रोसेस में कुछ ना कुछ हीट जनरेट होती होगी, ओके, या फिर कुछ ना कुछ हीट आपको रिक्वायरमेंट पड़ती होगी, तो उसको हम लैटेंट हीट बोलते हैं. तो प्लीज स्टूडेंट राइट डाउन. It is defined as the heat required. It is defined as the heat required to convert 1 kg of solid into liquid completely its boiling point. That means 1 kg solid को completely liquid में convert करने के लिए जो requirement heat की नीड पड़ती है, okay, उसको हम क्या बोलते हैं? Latent heat of fusion. Okay, got it my point? Now next is